Welcome dear students. I welcome all of you in the King classes. The topic which we are going to discuss today in the economics, that's indifference curve. Before going to the topic indifference curve, we should have the concept about cardinal utility and the ordinal utility. Cardinal utility के बारे में बात करेंगे. हमने पहले ही कार्डिनल यूटिलिटी के बारे में बताया हुआ है. When we extract our satisfaction from any commodity which we are consuming, that is assumed to be expressed in terms of cardinal numbers. That means 1, 2, 3, 4 dash dash dash. इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि कार्डिनल यूटिलिटी होता क्या है. जब हम अपनी satisfaction को एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स, दैट इज नोन एज कार्डिनल यूटिलिटी. ठीक है. उसके बाद में बात करेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी के बारे में. प्रोफेसर हिग्स ने इस कार्डिनल यूटिलिटी के इस एजम्पशन को रद्द किया एंड ही चैलेंजेस दिस कंसेप्ट दैट हाउ वी कैन से दैट व्हाइल टेकिंग अ कप ऑफ टी वी विल गेट 5 यूटिल्स. तो उन्होंने इस चीज को क्रिटिसिज्म किया कि एक कप ऑफ टी पीने को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं. हमने 5 यूटिलिटी या 5 यूटिल्स हमने गेन किया. सो ही ड्रा एन एजम्पशन और उसने अपनी एक थ्योरी दी इस बारे में कि ओरिजिनल यूटिलिटी के बारे में. प्रोफेसर हिग्स ने कहा कि हम आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं टू गुड्स को हम कंपैरिजन कर सकते हैं. वी कैन डिसाइड the preferences are on the basis of tastes. हम preferences की बुनियाद पर, tastes की बुनियाद पर इस चीज को comparison कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि कौन सी चीज हमें ज्यादा satisfaction देती है. For example, while taking a cup of tea, we get maximum satisfaction. While consuming a coffee, we get low satisfaction. यानी हम comparison करते हैं. अगर हम दाल रोटी खाएंगे हमें कितनी satisfaction मिलेगी, अगर हम चावल और दाल खाएंगे तो हमें कितनी satisfaction मिलेगी. तो प्रोफेसर हिग्स ने इस चीज के बारे में ये बताया कि हम कंपैरिजन कर सकते हैं आपस में कि कौन सा चीज हमें ज्यादा यूटिलिटी देता है. सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी. नाउ वी हैव टू डिस्क्राइब इंडिफरेंस कर्व. Professor Higgs has developed a theory of consumer equilibrium on the measurement of ordinal utility. This theory is popularly known as indifference curve analysis. So we have to describe indifference curve. What is an indifference curve? It is the set of those combinations of two goods which offer the consumer same level of satisfaction, so that the consumer is indifferent across any number of combination in the given indifference set. तो indifference करो हमको बताता क्या है. indifference करो हमें ये चीज समझाने की कोशिश करता है कि बहुत सारी combinations possible है जब एक कंज्यूमर दो गुड्स को कंज्यूम करता है और वो हर एक पॉसिबल पॉइंट पे जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस वो चूज करेगा दो गुड्स में से, तो हर एक पॉइंट पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी. एंड हियर ही इज इंडिफरेंट एंड ही कैन चूज एनी पॉइंट एंड एट एवरी एंड ईच पॉइंट ही विल गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. सो this is indifference curve concept which shows us that a consumer is indifferent at each possible point. He can choose any kind of combination and at every possible point he will be in equilibrium. Now we are going to show this by a table and also by graphically. So now we are going to show you the different combinations of two goods. When a consumer is consuming apples as well as oranges and he have to choose a combination in which he get maximum satisfaction, but indifference curve shows us that at each and every possible point a consumer will be in equilibrium. For example, the combination A which shows that number of apples is 1 and the number of orange 10, and here will be the consumer in equilibrium. And the combination B in which he consumes 2 apples and 7 oranges, and the next combination 3 apples 5 oranges, next combination 4 apples 4 oranges. So this table shows us that
he can choose both of the two commodities which he is going to consume, and he will be in equilibrium at each possible point. Now we are going to show you this graphically, in which you will better understand that a consumer will be in equilibrium at each possible point. Now we are going to show this indifference curve graphically. The table which we have shown to you expresses that each possible point, combination A, combination B, combination C and combination D, These are the combination combinations. of goods, orange and apples. So each and every point will give maximum satisfaction to a consumer. Now consumer is indifferent and he can choose any kind of point and he will be at equilibrium at every point. So this was the concept of indifference curve, which tells us that a consumer is indifferent while he has different combinations of two goods, and he is indifferent, he can choose any kind of combination so that he will be in equilibrium. Our indifference curve is based on ordinal utility, not on cardinal utility, because in the ordinal utility we take into consideration the preferences and the tastes. So here can be points more than 5, and while taking into the consideration the tastes and the preferences, the consumer will be in equilibrium at each possible point. This was our topic, indifference curve. Thanks and have a nice day.